A very charming good morning, dear student. And I am sure that all of you are busy engaging yourself in the preparation of your first online test going on here. Okay? In the series of the teaching videos, today I am going to teach you your lesson number 2, the sound of music. Yesterday I have taught you the first part of this lesson. Evelyn Glenn listens to sound without hearing it. And today I am going to teach you the second part of this lesson, the Shehnai of Bismillah Khan. Okay? Do you know these people, what instrument do they play? As you are staying at home, so it is supposed that the pictures whatever you are seeing here on the screen, you must check them from Google and note down their name, and the name of the instrument especially must be mentioned, that what are these instruments. Clear? This may be a good homework for you. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. Whenever we think about the Shehnai, actually Shehnai was played in ancient India, especially on all the occasions. But later on, due to some cause, we could not listen, we could not hear about Shehnai. Even today, if we go to any function, especially any marriage function, we go there. So we can notice at the entering gate, a team of the Shehnai players used to sit there and they play Shehnai only. We can listen that music there. But it was Ustad Bismillah Khan who provided the name and fame to Shehnai. So today we are going to read about this great person. Okay, the story begins with Emperor Aurangzeb, the cruelest emperor of Mughal Empire. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. So this was Aurangzeb who did not like the sound of pungi in the royal palace, because its sound was very shrill, not good to ears. So that's why he banned totally in the royal palace. Pungi became the generic name for reeded noise makers. So generic name is a name given to a class or group as a whole. पुंगी के लिए एक नेम दे दिया गया था क्लियर कि ये बहुत ही शोर मचाने वाला यंत्र है. Few had thought that it would one day be revived. Some of the people used to think that it may be possible that it may revive one day. Means in future someone may change its sound system as well, so it may revive.
Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. रॉयल फैमिली का जो एक बार्बर था वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए म्यूजिक उसके ब्लड में था. When he came to know about the band for Pungi by Aurangzeb, he decided to improve the sound system, sound quality of the Pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. So in his improvement उसने क्या किया बार्बर ने, उसने एक नेचुरल होलो स्टेम यानी एक बांस लिया जो बिल्कुल खोखला था लेकिन वो पुंगी के साइज से ज़्यादा लंबा और चौड़ा था. बार्बर ने उस होलो स्टेम में 7 होल्स बनाए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने उन होल्स को ओपनिंग क्लोजिंग करते हुए उसने जब साउंड दी तो उससे बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही स्वीट म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस इंस्ट्रूमेंट को उस रॉयल फैमिली के सामने राज दरबार में इसका प्रेजेंटेशन दिया और everyone was impressed hearing its sound. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. चूँकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था इट वॉज क्वाइट डिफर इन शेप एंड साइज ऑफ द पुंगी, सो ए न्यू नेम वॉज टू बी गिवन फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. सो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, I am not sure about the surety and certainty of the story and I am not claiming the facts towards it, but as the story goes, जैसा इसके बारे में कहानी चली हुई है कि इसीलिए इसको एक नया नाम दिया गया चूँकि it was first played in Shah Chamber and played by a nai, so both the words were joined together and it was named Shehnai. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious. Auspicious means prompting to bring good fortune. Positive एटीट्यूड, पॉजिटिव एंड ऑस्पिशियस मैटर्स होते थे, ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर इसको बजाया जाता था, इसलिए इट वाज कंसीडर दैट साउंड्स इज ऑस्पिशियस. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और इसीलिए फॉर दिस रीजन की एक ऑस्पिशियस है, पवित्र चीज़ है, इसको आज भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग ओकेजन पर जो उत्तर भारत में शादियाँ होती हैं वहाँ इसको बजाया जाता है. इंडिस्पेंसेबल, कंपल्सरी है ये वहाँ का इंस्ट्रूमेंट शादी के समय में. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. Essentials means compulsory. So in the past the Shehnai was part of the noble of traditional ensemble. Ensemble means a group of things. Ensemble means a group of things.
तो ये माना जाता था जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो 9 इंस्ट्रूमेंट थे म्यूजिक में, जो रॉयल कोर्ट में रॉयल जो राजा के दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, उनमें से एक शहनाई भी कंपलसरी था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। The credit for bringing this instrument on to the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. So it was used to play only in the temples and on wedding occasions. But the real credit for bringing this instrument on the world stage goes to Ustad Bismillah Khan. Ustad Bismillah Khan ने इसको world wide famous किया। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Damraon in Bihar. बिहार में एक जगह पड़ती है डमराव, वहाँ पर जो है बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। 5 साल के थे, वहीं तालाब था, उसके किनारे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri chant, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. After playing gilli danda, he regularly used to go to the temple of Bihariji. It was nearby. He used to go regularly there. And what did he used to do there? He used to sing the Bhojpuri chant. Because why did he used to sing the Bhojpuri chant there? Because after the end of the program, he was given a big laddu of 1 kg and 25 grams by the local Maharaja as a gift, as a award for him. So this happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. So 80 years before, he was awarded as a big laddu, and after 80 years of his age, he was awarded by the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान बिहार के बहुत ही वेल नोन म्यूजिशियन संगीतज्ञ के परिवार से बिलोंग करते थे और उनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। His grandfather Rasool Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His grandfather worked as a Shehnai Nawaz in the court of the Bhojpur king, and his name was Rasool Baksh Khan. His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors means ancestors of the father. Ancestors means forefather, Purvaj, were also great Shehnai players. So Bismillah Khan belonged to a family whose most of the members were famous Shehnai players. So that's why it was clear that playing Shehnai was in his blood. The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. When he was at the age of 3 साल की जब उनकी एज थी बिस्मिल्लाह खान की, तो उस समय ही उनकी माँ उनको उनके मामा का घर बनारस में था, बनारस में उनको ले गई उसके मामा के यहाँ। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Fascinated means attracted, charm,
बिस्मिल्लाह खान ने जो अपने अंकल्स को, अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. As a result, because Bismillah Khan has a great passion for Shehnai playing, so he joined the company of his uncle Ali Baksh. Later on, he started to go to the Vishnu temple where Ali Baksh employed to play the Shehnai. विष्णु टेम्पल में अली बख्श को शहनाई बजाने की नौकरी मिली हुई थी, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ जाना शुरू कर दिया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एन एंड। अली बख्श वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान केवल उनको सुनकर वहाँ कैप्टिवेटेड, बंदी की अवस्था में चुपचाप बैठे उसको सुनते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। एज ही वॉज ग्रोइंग अप, ज्यों ज्यों बड़े होते गए, सो he has a great charm for Shehnai playing. He started to learn how to play Shehnai and other instrument as well. And after learning it, he used to practice a lot. He used to practice playing Shehnai the whole day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. बचपन से ही बिस्मिल्लाह खान बालाजी के मंदिर में और मंगला मैया के मंदिर में आते थे और गंगा के किनारे पर हमेशा खेलते थे। इसीलिए उस यंग अप्रेंटिस में लर्नर, वो जो स्टार्टिंग किया था उन्होंने सीखने का, वो जो फेवरेट हाउंड्स मीन्स प्लेस, यहाँ इसका मीन्स है प्लेस विजिटेड मोर ऑफन, ऐसी जगह जब हम बार बार जाते हैं दैट इज कॉल्ड हाउंड्स। तो वहाँ पर वो सोलिट्यूड मीन्स लॉनलीनेस, अकेले में, आइसोलेशन में वो वहाँ प्रैक्टिस किया करते थे अपनी शहनाई प्लेइंग की। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोविस एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। कल कल बहती गंगा, गंगा की जो लहरें थीं, इंस्पायर्ड हिम, मोटिवेटेड हिम, उन्हें मोटिवेट करती थी टू इम्प्रोविस। टू इम्प्रोविस मीन्स टू डू ए थिंग इन ए न्यू एंड इन ए डिफरेंट वे। बस वो उनको इतना ज़्यादा इंस्पायर करती थी, क्या कहती थी गंगा की लहरें कि वाई डोंट यू improve the standard of playing Shehnai in your own way. That's why invent राग, उन्होंने कई राग डेवलप किए that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai, जो राग पहले कभी शहनाई से नहीं बजाए गए थे, उन रागों को उन्होंने बजाया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. When Bismillah Khan became 14 years younger, he got a golden opportunity to get company of his uncle Ali Baksh in Allahabad Music Conference. वहाँ उन्हें इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस वहाँ दी,
बिस्मिल्लाह खान ने जब अपनी परफॉर्मेंस दी तो वहाँ स्टेज पर उस्ताद फैयाज़ खान बैठे हुए थे। फैयाज़ खान पैटेड मीन्स पीठ थपथपाई, शाबाशी दी उन्होंने यंग बॉय को और कहा, फैयाज़ खान ने उन्होंने शाबाशी देते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ